Hello students, today we are going to begin with a new topic which is converting a common fraction into a decimal fraction. Common fraction means what? A fraction whose denominator is not fixed. Denominator can be any number. But decimal fraction means what? Decimal fraction means whose denominator is 10, 100 or 1000. So, for converting any fraction into a decimal fraction, we have to change its denominator to 10, 100 or 1000. So, this already we have studied in our 5th standard. So, we will do a quick revision of that. Now, see here, the fraction is 1 upon 2. Now 2 is a smaller number and we want either 10, 100 or 1000 in the denominator. Then only we will get decimal fraction, and 10, 100 or 1000. Any one number we can obtain. And all these three numbers are bigger than 2. So how to obtain a bigger number from a smaller number in a fraction? By doing multiplication. So 2 into which number will give us 10? 5. 2 5s are 10. So we will multiply this fraction by 5 in numerator also and in denominator also. Now why we have to multiply in numerator also? Because if we multiply only in denominator, then the value of the original fraction will change. If we multiply to both numerator and denominator by a same number, then the answer which we get, it is equivalent to the original fraction. This all we have studied in 5th standard. So 1 into 5 is 5 and 2 into 5 is 10. So after multiplication with same number, the fraction that we have got, this fraction and this original fraction, they both are called as equivalent fraction because we have multiplied by the same number, or we can divide by the same number. Then also we can obtain equivalent fraction. So now we have got here 10, and when 10 is there in denominator, such fraction is called as decimal fraction. And then how we will write it in decimal point? Here single zero is there, so after the point there will be single digit, and here also single digit is there in the numerator, so this digit will go after the point, and here we will write a 0. So 1 upon 2 can be written as 0.5. 1 upon 2 is equal to 0.5. Understood? So whenever 2 is there in the denominator, multiply with 5. Now the next example. 4. So this fraction we will multiply by which number? So in the table of 4, we do not get 10. 4 2s are 8, 4 3s are 12. 10 is not present in the table of 4. So next option is 100. Decimal fraction we want, means we want 10 or 100 or 1000. So 10 here it is not possible. So we will think of 100. So which number multiplied by 4 will give us 100? So that number is 25. Now how we have found this number 25? Okay. So whenever there is such a question, 4 multiplied by what is 100? Okay, we want to find the second number in the multiplication. So at that time what we do? We do division of 100 with 4. So 4 2s are 8. 10 minus 8 is 2. This 0 bring down. 4 5s are 20. So 4 multiplied by 25 is 100. Like this you can find out. So 4 into 25 will give us 100. Now denominator we have multiplied with 25. So numerator also multiply with 25.
Now 1 into 25, 25, 4 into 25 is 100. Now we will write this decimal fraction in point form. So here two zeros are there, means after point there should be 2 digit, and in numerator 2 digit are there. So both will go after the decimal point, and here we will write 0. So 1 upon 4 is equal to 0.25. Understood? Now next example, here denominator is 5. So 5 into which number is 10? Into 2. So here also into 2. जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. नाउ 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10. So this will be written as 0.4. So all this we have studied in our 5th standard also. Now what if there is already 10, 100 or 1000 in the denominator? If already there is such a number in the denominator, then what we will do? Directly we will write in the form of point, and this I have taught you in the first lecture only. Still we will see again. In that also there are 3 types we are going to study. यहाँ पे अलग अलग नंबर थे, फिर उसको हमने 10, 100, 1000 में लाया और फिर उसको हमने डेसिमल पॉइंट में लिखा. पर आगे जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 10, 100, 1000 वाले एग्जाम्पल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में है. तो अब आपको क्या करना है? ओनली डेसिमल पॉइंट में उसको लिखना है. तो ऐसे में भी 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप इज द number of 0 in the denominator are less and the number of digits in the numerator are more. So here there is single 0, means after the point there will be only 1 digit, and in numerator there are 3 digit. So what you will do? You will start counting from right side. उल्टा देखना है, और जो लास्ट में है सिंगल डिजिट उसको पॉइंट के बाद लिखना है, और बाकी के बचे हुए 2 डिजिट पॉइंट के पहले आएंगे. अंडरस्टूड? बिकॉज देयर इज सिंगल 0 इन द डिनोमिनेटर. तो जब डिनोमिनेटर में एक ही 0 है तो ऊपर वाला जो एक डिजिट लेना है वो कौन सा लेंगे? सबसे राइट वाला. नाउ हियर देयर आर 2 zeros in the denominator, means there will be 2 digit after decimal point. अब यहाँ पे ऊपर 5 डिजिट है और हमें चाहिए सिर्फ 2. तो कहाँ से लेना है हमें? राइट साइड के 2, मीन्स 5 and 0. लास्ट 2 will be after decimal point and remaining 3 will be before the decimal point, like this. Understood? Now here there are 3 zeros, means after point we want 3 digits, and in numerator there are 4. So take the last 3. आखिरी में से राइट साइड से हमें काउंट करना है. सो 8 3 1, 8 3 1 ये पॉइंट के बाद आएंगे, और बचता है 5, वो आएगा पॉइंट के पहले, बिफोर द डेसिमल पॉइंट. मीन्स इफ zeros are less and digits are more, ओके, सो काउंट फ्रॉम राइट साइड. उल्टा लेके फिर वो डिजिट्स पॉइंट के बाद एडजस्ट करना है. और पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे? जितने 0 डिनोमिनेटर में है उतने डिजिट पॉइंट के बाद होते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप, दिस वी हैव डन जस्ट नाउ ओवर हियर. इन द सेकेंड टाइप जितने 0 नीचे है उतने ही डिजिट ऊपर है, तो वो ऊपर वाला डिजिट पॉइंट के बाद आएगा और पॉइंट के आगे हमेशा 0 रहेगा. हियर ऑल्सो 2 0 2 डिजिट, तो दोनों जाएंगे पॉइंट के बाद और यहाँ 0 आ जाएगा. हियर ऑल्सो 3 0 3 डिजिट, तो तीनों डिजिट जाएंगे पॉइंट के बाद और यहाँ आ जाएगा 0. अंडरस्टूड? इफ मोर डिजिट्स आर देयर देन काउंट फ्रॉम राइट साइड, and if same number of digits are there
then all digits will be after point and before point there will be a 0. And the last type, if less digit are there, यहाँ पे 0 कम थे, ऊपर में डिजिट्स ज़्यादा थे. यहाँ पे जितने 0 उतने डिजिट, और यहाँ पे 0 ज़्यादा है और डिजिट्स कम है. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, whatever number of zeros are there, so here 2 zeros are there, मीन्स यहाँ पे भी 2 डिजिट चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट है उसके आगे 0 लेंगे. ओके, 8 मीन्स 08 ओनली, 08 means 8, 8 means 08. Now 2 digits are there, so after point we will write 08 and before point we will write a 0. Okay, one more example we will take. See here, 3 zeros are there and only one digit is there. So what we will do, we will write 2 zeros before 8. किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है. Whenever we write zeros before a whole number, the value does not change. 8 means nothing but 008 and 008 means nothing but 8. Now here there are 3 0, here there are 3 digit. So all the 3 digits will be after the decimal point and before decimal point there will be a 0. Here 3 zeros are there, 2 digits are there, so take 1 0. Now it is balance. Now these 3 digits will be after the point and before point there will be a 0. Understood how to convert it into decimal number? Now next topic is converting decimal fraction into a common fraction. So this is very easy. Now this is a decimal number, and how to convert a decimal number, how many digits are there after point? 1, means there will be only 1 0 in denominator and point will get removed. Point will get directly removed. Point remove कर देना और नीचे 10 लिखना है. क्यों? क्योंकि point के बाद एक डिजिट है तो एक 0. Now here 2 digit are there, तो पहले 100 लिख लो और पॉइंट को रिमूव कर दो, तो 004. पर 4 के आगे 0 है तो उन 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 4/100. ओके, यहाँ पे हमने उल्टा किया था, 8/1000 था तो 2 0 लेके पॉइंट लिया था, यहाँ पे उल्टा है. सो दिस विल बी 4/100. नाउ here there are 3 digits, so 3 zeros and remove the point. So this will be your decimal fraction, conversion of decimal fraction into a common fraction. Understood? Now we are going to start with practice set 15. First question, write the proper number in the empty box. So just now we have seen this 3/5. 3/5 का 10 कैसे आएगा? जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिनोमिनेटर में एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो इक्वल रहेंगे. नाउ 3 2s are 6, 5 2s are 10. Now how to write 6/10? 1 0 means 1 place, that will be 6 and यहाँ आ जाएगा 0. So 3/5 is nothing but 0.6. Now the second one, 25/8. Now here they have already given you that 8 we have to multiply by 125 and then only we will get 1000. अब देखो हमें 10 चाहिए, 100 चाहिए या फिर 1000 चाहिए. तो 8 के टेबल में 10 नहीं आता है, 8 1s are 8, 8 2s are 16. 100 भी नहीं आता है, 8 9s are 72, 8 10s are 80, 8 11s are 88. सो 100 भी नहीं आता है, तो इसलिए बचा कौन फिर? 1000. तो
8 को 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 मिलता है. सो डिनोमिनेटर में हमने 125 लिया, सो इन न्यूमरेटर ऑल्सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 125. नाउ दिस मल्टीप्लिकेशन इज 1000 and this multiplication is 3125. Here only answer is given. Now 3 zeros are there, so last 3 digit after the point and 1 digit remaining, that will be before the point. Understood? If 5 is there, take 2. If 8 is there, take 125. If 2 is there, then we will take 5. 5 2s are 10. Here also 5, here also 5. Now 21 into 5 is how much? 105. 5 1s are 5, 5 2s are 10. अब यहाँ पे नीचे एक ही ज़ीरो है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा, तो वो एक डिजिट कौन सा लेंगे? लास्ट वाला, और बचे हुए 2 डिजिट्स पॉइंट के आगे. सो आंसर विल बी 10.5. Now the fourth example, 22 upon 40. Now what they have done, they have written it as 11 upon 20. तो ये कैसे हुआ होगा? 22 upon 40 का 11 upon 20 by dividing both the numbers with 2. ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो दोनों इक्वल ही रहते हैं. तो 22 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 11, 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 20. नाउ 20 5s are 100, 2 5s are 10 and this 0. So here also multiply with 5. 11 5s are 55. Now here 2 zeros are there, so after point 2 digits, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट के बाद चले जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0. सो विच पेयर्स वी हैव स्टडीड? अगर 2 रहा तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करो. ओके 4 रहा तो 25 से करो, 8 रहा तो 125 से करो. अंडरस्टूड? नाउ second question, convert the common fraction into decimal fraction. Just now we have done 4 questions like that. So same way, नीचे है 4, तो 4 into 25, तो ऊपर भी 25. Now 3 into 25 is 75 and 4 into 25 is 100. Now 2 zeros, so 2 places means both the numbers will be after the point and यहाँ पे आ जाएगा 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 upon 5, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 2s are 10, so here also 4 2s are. Now 4 2s are 8, 5 2s are 10. सिंगल ज़ीरो सिंगल डिजिट, तो वो डिजिट जाएगा पॉइंट के बाद और यहाँ आ जाएगा 0. नेक्स्ट 8 है डिनोमिनेटर में, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 8 का पेयर ढूंढा था. 8 का पेयर है 125 और ऊपर भी आएगा 125. नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज 1125, 1125, and 8 into 125 is 1000. Now 3 zeros, so after point 3 digit. Which 3 digit? Last 3 from the right side you have to take. 1 2 5, बचा कौन? ये 1, तो वो आ जाएगा पॉइंट के पहले. So 1.125 is the answer. Next 20 is there. So what is the pair of 20? 5. 25 are 100 और ऊपर भी आ जाएगा 5. Now 17 5 are 85. Now 2
zeros, so both the digit after point, and here it will be a 0. Next 40 आता है तो क्या करना है, अभी हमने देखा डिवाइड बोथ द नंबर बाय 2. तो क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं? Yes. Here it is 6, means this number also we can divide by 2 and this number also. So divide by 2. What we will get? 36 divided by 2 is 18 and 40 divided by 2 is 20. Now for 20 we know the pair, it is 5. So multiply by 5 into 5 into 5. Now 20 into 5 how much? 100. 20 into 5 is 100 and 18 into 5 is 90. 90. So here 20, so here it will be 90 and here it will be 0. Next 7 upon 25. 25 की पेयर कौन है? 4. See here, 4 की पेयर 25, 25 की पेयर 4, because 25 4s are 100. So here we will take 4. Now 7 4s are 28, 25 4s are 100. 2 0, so 2 places, and here 2 digit means both after the point, and here it will be a 0. Now the last one, 219. So see here we know the pair of 20, it is 5. So 200 का भी पेयर रहेगा 5. सिर्फ यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 1000 हो जाएगा. So multiply by 5, multiply by 5. 19 5s are 95 and 200 into 5. 2 5s are 10. आगे 2 0 हो गया 1000. Now here 3 zeros are there, so after point 3 places. पर यहाँ पे तो 2 ही है तो यहाँ एक 0 लगा दो, हो गया 095 और यहाँ पे भी 0. So 0.095 is the answer. Now the last question, most easy. Convert decimal fraction into common fraction. तो सिर्फ पॉइंट हटा देना और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है नीचे उतने ही 0 लगाना है 1 के बाद. सो हियर 1 digit, that's why here it will be 10. Now remove the point. और कितने हैं? 1 2 3, तो नीचे आएगा 1 2 3. नाउ होल नंबर के आगे के 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता है तो ये हो जाएगा 7/1000. नेक्स्ट 90.8, remove the point and 1 digit after point, so here it will be 1 0 in the denominator. Next remove the point, after point 2 digit, so here also 2 0. Next remove the point, after point 2 digit, so 2 0 means 100. Now last one, here after the decimal point there are 2 zeros at the end. So already I have told you that at the end if zeros are there then they can be neglected, उनका कोई meaning नहीं रहता है. So actually this number is like this. Now after point there is 1 digit, so remove the point and there will be 1 0. पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिनोमिनेटर में 0 रहने चाहिए. अंडरस्टूड? So this whole practice set you have to solve in your notebook, practice set 15. Thank you.